Assalamu alaikum. Today's topic of presentation is anophthalmic socket. By the end of this presentation, audience will be able to define anophthalmia, discuss its causes, differentiate enucleation, evisceration, and exenteration, describe anophthalmic socket, discuss various rehabilitation procedures for anophthalmic socket, and list complications of anophthalmic socket and discuss their treatment. First, we will discuss some terms to differentiate what is anophthalmia and what is microphthalmia and cryptophthalmia. Anophthalmia is actually the absence of globe, and microphthalmia is defined as the underdeveloped eye. But there, in anophthalmia, there is only orbital cavity, and no content of the eye or the globe. But in microphthalmia, along with orbital cavity, there are some contents of the eye, but it is not a fully developed eye. In cryptophthalmos, there is complete or partial failure of development of eyelids, which is associated with varying degree of incomplete development of eyeball. This, this picture shows this is a baby with an anophthalmic eye, and this is a baby with microphthalmos. As you can see, there is eye, but it is underdeveloped, not a complete eye as compared to the other one. And this picture shows the cryptophthalmos. As you can see, there is no development of the eyelid. नॉर्मली यहाँ से सेपरेट होना चाहिए, आईलेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन आईलेट सेपरेट नहीं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो आपकी फोरहेड की स्किन है वो चीक के साथ कॉन्टिन्यू है, इसकी वजह से वो कवर कर लेती है और आई ग्लोब की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती. Anophthalmia is the absence of globe. It can be congenital or acquired. Congenital anophthalmos is a very rare condition, and it may be developed due to the failure of the optical vesicle to develop during embryological period. It occurs in 0.2 to 0.6 per 10,000 live births, and many cases initially diagnosed as anophthalmos contain remnants of an underdeveloped eye or vestigial eye tissue and are more appropriately termed as microphthalmos. Causes of congenital anophthalmos, it can be idiopathic or sporadic. It can be inherited as dominant, recessive, or sex-linked. It can be associated with trisomy 13 to 15, and it can be associated with maternal infection or teratogenic exposure. Or 75% cases of congenital anophthalmos are associated with syndromes. Ocular findings of congenital anophthalmos are small orbital rim and entrance, reduced size of bony orbital cavity, extraocular muscles usually absent, lacrimal gland may be present, and small and maldeveloped optical foramen are present. Eyelid findings are the shortening of lids in all directions, absent or decreased levator function with decreased lid folds, contraction of orbicularis oculi muscle, and shallow conjunctival fornix, especially inferiorly. Acquired anophthalmos usually occur after enucleation, evisceration, or exenteration. There are certain conditions in which these surgeries are indicated. For example, enucleation is done in case of blind painful eye, intraocular tumor, severe trauma with risk of sympathetic ophthalmia, phthisis bulbi, microphthalmia, endophthalmitis, and cosmetic deformity. Indications for evisceration are the same, except procedure is not performed in case of intraocular tumors or if there is a risk of sympathetic ophthalmia. इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटेल से, तो आपको पता चलेगा कि हम इस कंडीशन में क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें पूरा ग्लोब नहीं रिमूव होता, कुछ कंटेंट रह जाता है, तो यूवेल एंटीजन रिलीज होने का डर होता है, जिसकी वजह से आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है बाद में. Exenteration indications for exenterations are cutaneous tumors with orbital invasion, lacrimal gland malignancies, extensive conjunctival malignancies, other orbital malignancies, mucormycosis, chronic orbital pain, and orbital deformities. Can anybody tell what is the difference between enucleation, evisceration, and exenteration? Orbital tissues be removed. We will discuss one by one what is enucleation, evisceration, and exenteration. Enucleation is the removal of entire globe while preserving remaining orbital tissue. Means extraocular muscles और periorbital eyelids preserve रहते हैं और बाकी हम globe सारा remove करते हैं along with optic nerve. And it involves first releasing extraocular muscle from the sclera and then removal of the globe. Allows for complete histological examination of eye and optic nerve because सारा globe remove कर ले, optic nerve भी है तो histological examination करना आसान है पूरे की.
For debilitated patients unable to undergo surgery and rehabilitation, we usually consider retrobulbar injection of ethanol, which provide pain relief. But this injection is itself associated with severe complications like chronic inflammation, fibrosis, and pain. For non-painful or disgusted eyes, we consider cosmetic shelf prior to the removal of the eye. Evisceration is the removal of intraocular contents like lens, uvea, retina, and vitreous, leaving the sclera, extraocular muscles, and optic nerve intact. डिफरेंस उससे क्या है न्यूक्लिएशन से कि उसमें हम ऑप्टिक नर्व भी रिमूव करते हैं, स्क्लेरा भी साथ रिमूव करते हैं, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स रिमूव नहीं करते. और ईविजिरेशन में हम स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स तीनों चीज़ें प्रिजर्व करते हैं, जस्ट कॉन्टेंट्स ऑफ द आई रिमूव होते हैं. कंसिडर ओनली इफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्राओकुलर मैग्नेंसीज हैज़ बीन रूल्ड आउट. पहले आपने पेशेंट की इंट्राओकुलर मैग्नेंसीज को रूल आउट करना है, फिर आपने ईविजिरेशन की तरफ जाना है. अगर इंट्राओकुलर मैग्नेंसी सस्पेक्ट है और वो आ भी जाता है, पेशेंट का डायग्नोसिस बन जाता है, फिर आपने ईविजिरेशन इन्यूक्लिएशन की तरफ जाना है, या एक्सेंटरेशन अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, पेरी ऑर्बिटा को इन्वॉल्व कर रहे हैं. एडवांटेजेस ऑफ ईविजिरेशन आर लेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल एनाटमी, बिकॉज इसमें आईलिड्स, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स प्रिजर्व होते हैं, तो ऑर्बिटल जो एनाटमी वो डिस्टर्ब नहीं होती इतनी. बेटर मोटिलिटी ऑफ प्रोस्थेसिस, बिकॉज एक्स्ट्राओकुलर मसल अटैच हैं, जो भी हम इम्प्लांट लगाएंगे वो आई मूवमेंट के साथ मूव करेगा. Treatment can be used for the treatment of endophthalmitis. Technically simple procedure, low rate of migration or extrusion of implant and subsequent reoperation. Easier prosthesis fitting by the oculist. Disadvantages of eviscerations are not every patient is the candidate. Theoretical increased risk of sympathetic ophthalmia, which is a delayed hypersensitivity response to a uveal antigen. अगर ड्यूरिंग evisceration हमारे पास कुछ भी एंटीजन रिलीज हो जाता है और प्रॉपर आपने रिमूवल नहीं किया, तो फिर आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होगा, जो आपके फेलो आई को भी फिर बाद में, क्योंकि उसमें भी यूवेल एंटीजेंस है, उस यूवेल एंटीजेंस को जाके भी इफेक्ट करे, अगर आपकी फेलो आई भी, उसमें भी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी. अफोर्ड्स अ लेस कंप्लीट स्पेसिमन फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि स्क्लेरा और बाकी ऑप्टिक नर्व तो वहीं हो सकता है, वहाँ भी एक्सटेंड किया हुआ कोई ट्यूमर या जो भी डिजीज है, तो इसलिए लेस कॉमन स्पेसिमन फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. Exenteration is the removal of some or all of the orbital tissue including the globe. अब कितना ऑर्बिटल टिश्यू रिमूव किया उसकी बेसिस पे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, सब टोटल, टोटल एंड एक्सटेंडेड. इन सब टोटल एक्सेंटेशन, आई एंड एडजेसेंट इंट्राऑर्बिटल टिश्यूज आर रिमूव्ड सो दैट लेजन इज लोकली एक्साइज्ड. इन सब टोटल मोस्टली हम पेरी ऑर्बिटल को प्रिजर्व करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स रिमूव कर लेते हैं. यूज फॉर सम लोकली इन्वेसिव ट्यूमर्स, फॉर डीबल्किंग ऑफ डिसेमिनेटेड ट्यूमर्स एंड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन सिलेक्टेड पेशेंट्स. In case of total or intraorbital soft tissues including periorbita are removed with or without the skin of eyelids. In extended, all intraorbital contents soft tissues are removed together with adjacent structures like eyelid and other skin part. This is a picture showing exenteration. अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी आईलिड का पार्ट, कोई भी ऑर्बिट का पार्ट, कोई भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ ऑर्बिटल कैविटी हमारे पास रहेगी. जितना भी स्ट्रक्चर था ऑर्बिटल टिश्यू सारा हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है. इट इज़ आईलिड रिमूवल 2 days पोस्ट ऑपरेटिवली, एंड दिस पिक्चर शोज सेम पेशेंट आफ्टर 6 months, बिकॉज उसमें वो ग्रेनुलेशन टिश्यू सारा डिवेलप हो गया. एंड द थर्ड पिक्चर शोज स्पेयरिंग ऑफ द आईलिड्स, मतलब ये वो है जिसमें हमने आईलिड्स रिमूव नहीं की. इसके अंदर टोटल और सब टोटल, जिसमें हम आईलिड्स रिमूव नहीं करें लेकिन बाकी स्ट्रक्चर हमने इसमें रिमूव कर दिया. Another picture shows total exenteration and reconstruction. It can be reconstructed using a split skin thickness graft. मतलब या तो आप इसे छोड़ दे तो ग्रेनुलेशन टिश्यू खुद ही डेवलप हो जाएगा और ये सारा कवर हो जाएगा, या फिर आप इसको कवर कर सकते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट से भी. Goal of exenteration is to remove all lesion along with appropriate margins of adjacent tissues. Following removal, bony socket may be allowed to spontaneously granulate and epithelize, or it may be covered by split thickness graft or collagen skin replacement. Rehabilitation after exenteration, अगर exenteration कर ली है तो पेशेंट को रिहैब कैसे करेंगे? इसकी रिहैबिलिटेशन डिफरेंट है फ्रॉम इन्यूक्लिएशन एंड इविजिरेशन, बिकॉज इसमें तो पीछे कोई ऑर्बिटल कंटेंट नहीं है, इसमें फिर इम्प्लांट लगाना और सिर्फ कॉस्मेटिक शेल रखना मुश्किल होता है. तो इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, प्रोस्थेसिस यूज करते हैं अटैच टू एन आई ग्लासेस फ्रेम, या तो ग्लास फ्रेम के साथ अटैच कर देते हैं ताकि कॉस्मेटिकली अच्छा देखने में ठीक लगे. टू It can be attached to periorbital area or to also integrated implant facilitated with magnetic post. इस पिक्चर में जैसे शो किया हुआ है कि ये ऑर्बिट है, इस पे कुछ मैग्नेटिक पोर्ट्स लगे हुए हैं
और ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट मोल्ड्स लिए जाते हैं, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसकी स्किन के साथ प्रॉपर आई मतलब पूरा एरिया प्रिपेयर किया जाता है। और इसको जब हम अटैच करते हैं इसमें कुछ मैग्नेटिक फोर्स होती हैं जिसके थ्रू वो मतलब उसके साथ स्टिक कर देते हैं, तो रिमूव होना आसान होता। अब यू कैन सी कि आप तो पिक्चर फील ही नहीं हो रहा है कि पेशेंट को कोई इम्प्लांट भी लगे, क्योंकि वो स्किन भी साथ ही सब कुछ। दिस पिक्चर शोज, आप इसमें अच्छा पता चल जाएगा कि पेशेंट है विद एक्सेंटिरेशन। बिफोर एक्सेंटिरेशन या प्रोस्थेसिस इम्प्लांट वो बिल्कुल एक कैविटी से फील हो रही है, लेकिन जब उस पेशेंट को बिल्कुल स्किन से रिलेटेड प्रोस्थेसिस लगाया तो बिल्कुल कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा अपीयरेंस है। वो लग बात है, किसी को नहीं पता कि उसे नजर आ रहा है या नहीं, बट कॉस्मेटिकली पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अनदर पिक्चर शोइंग के प्रोस्थेसिस ग्राफ जो कि आपके ग्लासेस पे लगे होते हैं, इसको जैसे ग्लासेस वेयर करेंगे तो वो सारा कवर कर जाएगा, एक नॉर्मल आई की तरह अपीयरेंस आएगी। Anophthalmic socket, an orbit not containing an eyeball but with orbital tissue and orbital tissue island, rarely congenital but usually is acquired. Most common cause of anophthalmic socket is enucleation. Optimal time to achieve the best functional and cosmetic result for the anophthalmic patient is the time of enucleation. ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि उस टाइम पे करना चाहिए या बाद में आपने किस तरह करना होता है, कितने टाइम के बाद। First one, rehabilitation of patient with enucleation and evisceration. First one is the cosmetic shells. Ocular prosthesis that is used to cover a thiacal or unsightly eye. मतलब पेशेंट है वो सर्जरी नहीं करवा सकता या सूटेबल नहीं है, तो उसमें और पेशेंट की अनसाइटी आई लगे तो हम सिर्फ कॉस्मेटिक शेल अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो कॉस्मेटिकली ठीक लगे, और बाद में अगर हमें लगता है सर्जरी तो हम सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। द शेल कैन रिस्टोर वॉल्यूम एंड प्रोवाइड द गुड कॉस्मेटिक अपीयरेंस with reasonable motility as a result of transmitted movement from the globe. क्योंकि ग्लोब तो अपनी जगह, मूवमेंट्स उसके भी प्रिजर्व है, तो उसके साथ इसकी मूवमेंट्स भी पॉसिबल है। द सेकेंड वन इज ऑर्बिटल इम्प्लांट्स। फंक्शन ऑफ दिस इम्प्लांट्स आर टू रिप्लेस लॉस्ट ऑर्बिटल वॉल्यूम। जब हमारे पास इन्यूक्लिएशन या इविजिरेशन होती है तो मेन जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है पोस्ट इन्यूक्लिएशन वो वॉल्यूम डेफिसिट की आ रही होती है। तो मेन हमारा पर्पज इन इम्प्लांट्स का रिहेबिलिटेशन का यही होता है कि हमने उस वॉल्यूम डेफिसिट को कम करना है, या वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से जो भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, एनोफ्थेल्मोसिस, डीप सर्कल्स, उनको हमने करेक्ट करना है। So the first function is to replace lost orbital volume and maintain structure of orbit, impart motility to overlying ocular prosthesis. It can be grouped into two types: inert material or biointegrated materials. Inert materials include glass, silicone, methyl methacrylate, and biointegrated materials include hydroxyapatite, porous polyethylene, and aluminium oxide. This picture shows different types of orbital implants. These are the example of various orbital implants. From left to right, this is the silicone one with 18 millimeter diameter, and this is hydroxyapatite. This one is the porous polyethylene, and this one is the silicone. और समटाइम्स आप प्रोस्थेसिस लगाते तो उसके लिए पैग्स भी यूज कर सकते हो उसको उस प्लेस पे रखने के लिए। दीज आर द वेरियस पैग्स एंड रेस्क्यू ट्यूब्स फॉर इंटीग्रेटेड ऑर्बिटल इम्प्लांट्स। मेनली ये इनर्ट मटीरियल्स के लिए यूज नहीं होता क्योंकि वो नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं। द बायो इंटीग्रेटेड जिनको आपने वहाँ पे अप्लाई करना है उसके लिए आप ये पैग्स यूज कर सकते हैं। Another picture showing non-integrated, fully integrated, semi-integrated and expandable implants. What are the advantages of inert spherical implants? It provides comfort, low extrusion rate, and cost effective. Disadvantages are there may be possibilities of decreased motility क्योंकि less integrated है, ये non-integrated है, तो वो growth नहीं होगी, वो attach proper नहीं होंगे, तो motility chances कम हो सकते हैं इसमें। Implant migration, क्योंकि प्रॉपर अटैच नहीं होगा तो वो माइग्रेट या एक्सट्रूजन बाहर निकल सकता है ऑर्बिट में से। स्पेयर्स ऑफ इनर्ट मटेरियल में बी रैप्ड इन स्क्लेरा, पॉलीग्लैक्टिन मेश और ऑटोजीनस मटेरियल्स लाइक फेशिया, डर्मिस और मसल टू प्रोवाइड अ सबस्ट्रेट फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। Porous implants allow for direct attachment of extraocular muscles as well as drilling and placement of peg to integrate the prosthesis directly with the moving implant. It is carried out after 6 to 12 months after enucleation to allow for the complete vascular integration. Higher rate of postoperative complications including inflammation and post-exposure. After enucleation, implants are usually placed either within the tenon capsule or in the muscle cone behind the posterior tenon capsule. क्योंकि enucleation के बाद sclera या ऑर्बिटल मेन आई बॉल नहीं होता, तो या तो आप इसे टीनोन कैप्सूल में रख सकते हो या पीछे मसल कॉन में, क्योंकि मस्कुलर कॉन प्रिजर्व्ड होती है, एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स प्रिजर्व्ड होते हैं।
आफ्टर इविजिनेशन, बिकॉज उसमें स्क्लेरा भी होता है, आपने प्रिजर्व किया होता है, तो इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड आइदर बिहाइंड और विद इन द स्क्लेरा. Spheres may be covered with materials such as sclera, homologous or cadaveric, autogenous fascia or polygalactic mesh, which serve as a further barrier to migration and extrusion. मतलब आपने इम्प्लांट लगाया उसे फर्दर आगे से कवर कर दिया ताकि बाद में फ्यूचर में किसी भी कंडीशन की वजह से, पुअर वेस्कुलरिटी और पुअर सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से वो उसकी एक्सट्रूजन या इम्प्लांट बाहर की तरफ ना आ जाए. थर्ड वन इज द ocular prosthesis. After enucleation or evisceration, a conformer made of silicone or acrylic material is placed to support the conjunctival fornices and remain in place until the socket is fitted with an artificial eye. पहले आप कन्फॉर्मर लगाते हो ताकि आई बॉल मेंटेन रहे, फिर आप कुछ वेट करते हो 4 to 6 वीक्स का, उसके बाद आप अपनी जो आर्टिफिशियल आई है वो पेशेंट को लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं. An ocular prosthesis is generally fitted 4 weeks after enucleation or evisceration, custom fitted to the exact dimension of the patient's conjunctival fornix after post operative edema. आपने पहले उसको उनके अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के उसकी आई में कितना एडजस्ट कर सकते हैं, आपने पहले वो मेजरमेंट्स लेनी होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है, वो लगाना होता है. लेकिन पहले आपने जो पोस्ट इन्यूक्लिएशन एडीमा है उसको रिजॉल्व करना है, उसके बाद आपने आई अप्लाई लगानी, इसलिए तो 4 वीक्स हम वेट भी कर रहे होते हैं. पेशेंट माइट रिमूव द प्रोसेसिस वंस अ मंथ फॉर क्लीनिंग, बिकॉज जब आपके पास एक प्रोसेसिस लगा है तो उसके पीछे म्यूकस क्रिशंस इकट्ठे होने, क्योंकि हमारे पास पेल्विब्रल कंजक्टिवा है तो उसके जो सेल्स हैं वो एक्सक्रीशंस कर सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपने वंस अ मंथ उसे निकाल के साफ भी करना होता है ताकि वो इन्फेक्शन फर्दर आगे स्प्रेड ना कर सके. Now we will discuss anophthalmic socket complication and their treatment. First is the post-enucleation socket syndrome, and this term is introduced by Tyler and Colin. Mainly caused by failure to create the volume deficit adequately. It is a sequelae of enucleation. Sequelae of enucleation are orbital volume deficiency and changes in the orbital soft tissue architecture, leading to clinical picture of post-enucleation socket syndrome. And the patient, and the clinical feature in this condition is usually anophthalmos and upper eyelid sulcus deformity, ptosis or eyelid retraction, laxity of lower eyelid, backward tilt of the ocular prosthesis. This picture shows the typical features of right post-enucleation सॉकेट सिंड्रोम ऑफ द राइट आई. रिट्रैक्शन है, डीप सर्कस है, आप साइड से देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डीप सर्कस भी है, और आपका जो प्रोस्थेसिस है वो बैकवर्ड टिल्ट हुआ हुआ है, पीछे को गया हुआ है. अनदर पिक्चर शोइंग लेफ्ट अपर आईलिड टिल्ट एंड अपर आईलिड सर्कस डिफेक्ट. इसकी निस्बत यहाँ पे जो सर्कस है वो ज़्यादा डीप है. Second picture shows leg of thalmos in the same patient, and the third picture shows examination of socket reveals that superior fornix contracture is the cause of leg of thalmos. क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने fornix देखा तो यहाँ पे ये contractures बने हुए जो उसको proper नीचे जाने नहीं दे रहे, आज को proper close नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से leg of thalmos आ रहा है. Other changes are in tears production and outflow may also diminish with time in the anophthalmic socket. Socket discharge is common in anophthalmic socket. Mucus secretions from conjunctival goblet cells may increase, often interpreted as infection by the patient. Management of post-enucleation socket syndrome divided into 4 types. We do mainly do orbital volume replacement, क्योंकि mainly तो orbital volume deficit आ रहा है तो हमने उसकी replacement करनी. It can be corrected with secondary implants, orbital floor implants और dermis fat graft to upper sulcus. अगर हमारे पास deep sulcus है तो हम उसमें fat को इंजेक्ट कर सकते हैं, उससे वो सर्कस जो हमारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा. लोअर लिड टाइटनिंग, अगर लोअर लिड लैक्सिटी हुई है उसके लिए हम लोग लेटरल कैंसर स्लिंग कर सकते हैं, मीडियल कैंसर रिकंस्ट्रक्शन एंड फेशियल स्लिंग. Correction of shallow lower fornix can be done with fornix deepening sutures, ये भी हम आगे पिक्चर्स में भी देखेंगे. एंड द फोर्थ वन इज टोसिस, उसके लिए हमने टोसिस करेक्शन करनी है पेशेंट की. Anophthalmos and superior tarsal sulcus deformity result from poor orbital volume, result of inadequate volume replacement at the time of surgery, and subsequent due to atrophy of fat and inferior migration of implant. These are the 3 causes जो कि responsible है for anophthalmos and superior tarsal sulcus deformity के लिए. ट्रीटमेंट ऑफ वॉल्यूम डेफिशिट, अगर ऑर्बिटल वॉल्यूम डेफिशिट रिक्वायर्ड है पहले तो आपने उसको प्राइमरी इम्प्लांट देना है. प्राइमरी इम्प्लांट देने के बाद भी अगर पेशेंट में वॉल्यूम डेफिशिट आ रहा है तो आपने देखना है कि उसे जो इम्प्लांट फर्स्ट दिया गया था प्राइमरी वो एडिक्वेट था भी या नहीं, मतलब उसको जितना इम्प्लांट उसके आई के अकॉर्डिंग जो उसको कस्टमाइज चाहिए था वो दिया भी गया या उसे नहीं इम्प्लांट लगाया गया. अगर तो वो इम्प्लांट नहीं था तो आप सेकेंडरी इम्प्लांट अप्लाई करेंगे और अगर तो एडिक्वेट इम्प्लांट था प्राइमरी तो फिर आप सिर्फ ऑर्बिटल फ्लोर इम्प्लांट
लगाएंगे। बट अब पेशेंट को हमने सेकेंडरी इम्प्लांट दिया, उसके बाद हमने फिर दोबारा से चेक करना है कि रेजिडुअल वॉल्यूम डेफिशिएंट तो नहीं है। उसमें फिर हमने देखना है कि अगर तो डेफिशिएंट है, स्टिल अभी डेफिशिएंट है, मतलब हमने प्राइमरी इम्प्लांट दिया, फिर हमने सेकेंडरी भी दिया, लेकिन स्टिल आपका वॉल्यूम जो है वो मेंटेन नहीं हुआ, हमने उसको फिर दोबारा से ऑर्बिटल फ्लोर इम्प्लांट की तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम डेफिशिएंट हो गया करेक्ट, तो फिर आपने देखना है लोअर लिड लैक्सिटी को आपने ट्रीट करना है, उसके लिए फिर आपने वही डर्मस फ्लैट ग्राफ्ट अप्लाई करने हैं। लेकिन अगर लिड लैक्सिटी पेशेंट में नहीं है, तो फिर आपने रेजिडुअल अपर लिड सर्कस डेफिशिएंट के लिए जाना है, क्योंकि लिड लैक्सिटी रूल आउट हो गया पेशेंट की, तो हमें उसे ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर हमारे पास ऑर्बिटल इम्प्लांट के बावजूद रेजिडुअल अपर लिड सर्कस डेफिशिएंट है, कि डीप सर्कस है, स्टिल अभी तक मेंटेन नहीं हुआ, तो फिर आपने उसमें दोबारा से डर्मिस फैट ग्राफ्ट अप्लाई करने होते हैं अपर लिड पे। मतलब आपने सब मेनली पहले चलना है कि प्राइमरी इम्प्लांट अप्लाई करें, कि नॉर्मली जो पेशेंट हम करते हैं इन्फ्लेशन के बाद इम्प्लांट लगाया, इम्प्लांट के बाद हमने पेशेंट को फॉलोअप पे रखा, हमने देखा कि स्टिल पेशेंट अभी भी डेफिशिएंट है, फिर उसमें फर्दर आपने स्टेप बाय स्टेप जाते रहना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। Treatment of anophthalmos is the placement of secondary orbital implant for if no implant was placed at the time of primary surgery. Dermis fat graft is an option in patients with associated surface contractures. Orbital floor plants can be autologous and can be done with bone grafts, or non-autologous can be done with Medport. Treatment of spear surface deformity is done with implantation of fascia lata, sclera, bone, fat, alloplastic material in upper eyelid. This is a picture showing dermal fat graft के हम जो है फैट लेते हैं, डबल फैट ग्राफ्ट लेते हैं फ्रॉम द ग्लूटियल एरिया, उसकी डीएबेथलाइजेशन करते हैं, वहाँ से 20 ब्लेड से ट्रांजेक्शन करते हैं फैटी टिश्यूज की। आफ्टर कंप्लीट इंसिजन ऑफ द डर्मिस लेयर, फिर देन रिमूवल ऑफ कंप्लीट डर्मिस फैट ग्राफ्ट, यहाँ से पूरा हमने ग्राफ्ट ले लिया, सारी स्किन रिमूव करके नीचे से। देन इस इन ग्राफ्ट को हमने सॉकेट में जो है इंसर्ट करना है, और ये सारा प्रोसीजर बताया हुआ कि पहले अपने इंसिजन लगा के एरिया बनाना है, फिर उसमें आपने इंसर्ट कर दिया। Picture E is showing the suturing of recipient conjunctiva at the edge of the graft, and the last picture shows insertion of a conformer at the end of the surgery. Leg socket and inferior fornix shelving usually occur due to the shifting of tissues within the orbit. May also occur with time if there is involutional relaxation of the supporting tissue of the inferior eyelid. The weight and pressure effect of the prosthesis co-laxity of the lid resulting in ability to retain the prosthesis. It can be treated by using prosthesis of optimal size and weight, lateral tarsal strip, fornix formation suture of increase to increase the depth of inferior fornix. अगर पेशेंट की लोअर लिड लैक्सिटी है, उसको हमने किस तरह ट्रीट करना है? अगर तो हमारे पास आ जाती है, तो हमने देखना एरिया ऑफ मैक्सिमम लिड लैक्सिटी, आइदर वो लेटरली है, मीडियली है, या जनरली पूरी ही आईलिड इन्वॉल्व है लैक्सिटी में। इफ देर इज ओनली लेटरल लैक्सिटी, तो उसको हम लेटरल कैंथर स्लिंग से ट्रीट करेंगे। इफ देर इज मीडियल, देन वी विल ट्रीट इट विद मीडियल कैंथर टेंडर कंस्ट्रक्शन। अगर फुल है तो हम इसको फेशियल स्लिंग करेंगे। स्टिल शैलो लोअर फॉर्निक्स है, तो आपने फॉर्निक्स डीपनिंग सुचर्स लगाने, अगर नहीं है तो फिर फर्दर आपने टोसिस की ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। दिस पिक्चर शोज लोअर लिड लैक्सिटी इन रिक्वायर्ड एनोफ्थेल्मोस एंड द लेटरल कैंथर टेंडर, आफ्टर लेटरल कैंथर टेंडर रिपेयर, बिल्कुल जो आपकी लैक्सिटी है वो ठीक हो गया है, और इसमें उन्होंने ये प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया। और ये सारे प्रोसीजर्स हम एक दफ़ा टोसिस वाले प्रोसीजर चैप्टर में कवर कर चुके हैं, लेटरल कैंथर रिकंस्ट्रक्शन एंड मीडियल कैंथर रिकंस्ट्रक्शन। दिस पिक्चर शोज फॉर्निक डीपनिंग सुचर्स। यहाँ पे आपने ये एनाटॉमिकल है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल फॉर्निक्स में नीचे जाके अंदर से आपने लोअर लिड से पास करने, बाहर एक्सटर्नली लेकर आने हैं, और उसको नॉट कर देनी। इसमें बिल्कुल 3 सुचर्स उन्होंने अप्लाई किए हैं, इससे ये होगा कि डीपनिंग हो जाएगी फॉर्निक सुचर्स की। This picture shows anophthalmic socket with shallow lower fornix, and if sufficient lining is present, fornix deepening sutures are fixed to the periorbita. Anophthalmic ptosis occur due to the inadequate implant size, migration of orbital implant, poorly fit prosthesis, laxity of fibrous connective tissues, orbital trauma from the original injury or surgery, senile dehiscence of levator aponeurosis, frequent manipulation of the eyelids to insert and remove the artificial eye also stretches the upper eyelid tissues, leading to drooping eyelids. These are the causes of anophthalmic ptosis. If there is a ptosis, then it can be correctable with, अगर ptosis है और वो correctable है with artificial eye, तो हम न्यू artificial eye अप्लाई कर दें। अगर वो treatable नहीं है, तो फिर हम वही ptosis सर्जरी की तरफ जाएंगे। Picture showing ptosis in the right eye.
A 40-hour film was seen with ptosis and anophthalmos of the left socket as her orbital implant was put in as a child and was rather small. This picture is after the ptosis surgery की ptosis जो है आपका ठीक हो गया. ट्रीटमेंट ऑफ टोसिस अगर स्मॉल टोसिस है या माइल्ड टोसिस है प्रोस्थेसिस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप दोबारा से न्यू आर्टिफिशियल आई अप्लाई कर सकते हो. माइल्ड टोसिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड विद मूलर मसल conjunctival resection which shortens the superior fornix. If there is a greater ptosis, then advancement of levator aponeurosis procedure is done to correct the ptosis. Anophthalmic ectropion is mainly caused by the lower eyelid ectropion in anophthalmic socket, frequently associated with significant lower lid laxity. Large or heavy prostheses or frequent prostheses may contribute to the stretching of medial or the lateral canthal tendons. Rotation of orbital contents inferiorly and anteriorly contribute shallow inferior fornix state of prosthesis and lower lid ectropion. Anophthalmic ectropion of the lower eyelid, ये आप देख सकते हैं नॉर्मली इतना है और ये ectropion शो कर रहा है. Treatment is if the prosthesis placed the duration of the prosthesis की greater than 5 years old है 5 year old है तो new or may be तो आपने उस prosthesis को replace कर देना है नए से. अगर तो प्रोस्थेसिस लार्ज है तो उसको थिनर और लाइटर प्रोस्थेसिस है क्योंकि लार्ज की वजह से भी एक्ट्रोपियन होने के चांसेस हैं. टाइटनिंग द लेटर एंड मीडियल कैंथल टेंडन में करेक्ट द एक्ट्रोपियन, करेक्शन ऑफ आईलिड रिट्रैक्शन बाय रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर रेक्टस और ग्राफ्टिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन टिश्यू इन इंफीरियर फॉर्निक्स. Exposure and extrusion of the implant. Implant exposure may occur with any type of implant or at any time versus at any time may lead to implant extrusion or explantation. मतलब नॉर्मली ये होती है इसके भी हम कोजेस पढ़ेंगे किस वजह से ये कि हमने जो इम्प्लांट लगाया उसे मतलब फर्दर आगे स्क्लेरा से बंद किया तो वो एक्सट्रूजन क्यों होगी. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आर द क्लोजिंग द वुंड अंडर प्रेशर, मतलब आपने बहुत प्रेशर से किया वो ओपन हो गया तो आपका इम्प्लांट बाहर आ गया. पुअर वुंड क्लोजर टेक्निक, इन्फेक्शन, मैकेनिकल और इन्फ्लेमेटरी इरिटेशन फ्रॉम स्पेक्युलेटेड सरफेस ऑफ द पोरस इम्प्लांट, delayed ingrowth of fibrovascular tissue with subsequent tissue breakdown and compromised vascularity can lead to extrusion. Preventive measures are proper placement of implant within the orbit followed by 2 late closure of anterior tenons capsule and conjunctiva. Proper मतलब आपने technique apply करनी है. The rectus muscles are attached to the wrapped implant. Treatment if few weeks have passed then and there is no infection, simple closure or patch graft is required. If infection is suspected and treated vigorously with topical and systemic antibiotics, then extrusion and removal implant may be avoided. If implant को time जो है वो beyond 4 to 6 months हो गया तो हमने देखना either वो non porous material or the porous material. If there is the non porous material, defect should not be closed and secondary orbital implant surgery should be arranged. मतलब आपने उसको remove करके secondary orbital implant surgery करनी है. If the material used previously was porous, तो फिर हमने देखना एक्सपोजर कितना हुआ है, मतलब कितना एक्सपोज आपको इम्प्लांट नजर आ रहा है. इट इज लेस देन 3 mm, देन ट्रीट कंजर्वेटिवली एंड वेट फॉर 8 weeks फॉर द स्पॉन्टेनियस क्लोजर. लेकिन अगर 8 weeks के बाद भी स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं होता तो आप उसे स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट से करेक्ट कर सकते हो. बट अगर एक्सपोजर है ही ग्रेटर 3 mm देन सर्जिकल रिपेयर इज इंडिकेटेड यूजिंग स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट और टेम्पोरालिस फेशिया पैच ग्राफ्ट. Another is the contracted socket. It is actually the shrinkage and the shortening of orbital tissue causing a decrease in depth of fornices and orbital volume, ultimately leading to an ability to retain prosthesis. Contracted होगा तो prosthesis maintain नहीं होगा. Gimmer has classified clinically contracted socket into 4 morphological types. Anophthalmic contracted socket जो mostly after enucleation and evisceration के आपको मिलेगा. Ophthalmic contracted socket following chemical or irradiational injuries. Microphthalmic contracted socket in association with microphthalmos and microcornea. Hypoplastic contracted socket congenital underdevelopment of bony socket. Picture showing the contraction of right anophthalmic socket. Causes are divided into 4 types: etiological related, surgery related, site related, implantation and prosthesis related. Etiology related causes are alkali burns and radiation therapy. Surgery related are fibrosis from initial injury can lead to contracture. Post-surgical techniques during previous surgeries, excessive sacrifice of conjunctiva and tenon capsule, traumatic dissection within the socket leading to scar tissue, and multiple socket operations. Site-related causes include poor vascular supply, severe ocular ischemic disease in the past, cicatrizing conjunctival disease, chronic inflammation and infections. Implant and prosthesis related, implant migration, implant exposure, not wearing a conformer or prosthesis or ill-fitting prosthesis can lead to contracted socket. This is a treatment for
patient with contracted sockets. If there is associated volume deficit along with the contracted socket, then we will see either there is associated volume deficit or not. If there is volume deficit, then mild contractions देखने के आइदर देयर माइल्ड कंट्रैक्शन है और सीवियर कंट्रैक्शन. देयर इज माइल्ड कंट्रैक्शन देन एंट्रोपियन सर्जरी के लिए जाएंगे. इफ देयर इज नो और वो मॉइस्ट एरिया है तो आपने म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट अप्लाई करना है. अगर तो एरिया मॉइस्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्टेड का तो आपने स्किन ग्राफ्ट के साथ उसको क्लोज करना है. अगर वॉल्यूम डेफिशिएंट है और साथ में माइल्ड कंट्रैक्शन भी है तो आपने एक्सपोज्ड डर्मोफैट ग्राफ्ट अप्लाई करना है. अगर आपके पास माइल्ड कंट्रैक्शन नहीं है वॉल्यूम डेफिशिएंट के साथ तो आपने सिर्फ ग्राफ्ट अप्लाई करना, साथ इम्प्लांट अप्लाई करके उसके ऊपर ग्राफ्ट लगाना है. ग्राफ्ट आप बकल मिकोजा से भी ले सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन graft. Conjunctival changes are the conjunctival cyst secondary to the epithelial migration beneath the surface. Poor wound closure during enucleation is typically the cause. Treatment not necessary unless the cyst size interfere with the comfortable prosthesis wear. Giant papillary conjunctivitis develops with prosthesis wear due to the mechanical friction between the palpebral conjunctival surface and the prosthesis. Patients typically present with constant mucus discharge. So treatment consists of topical corticosteroids and occasionally prosthetic modification. Last, I have added a review of an article which was published on 15th August 2023 in a Journal of Ophthalmic Plastic and Reconstruction Surgery. They actually, the purpose of this study was to check the efficacy of injectable calcium hydroxyapatite for the treatment of volume deficit after post-enucleation socket syndrome. They actually did a 10-year follow-up of orbital volume augmentation with calcium hydroxyapatite filler in post-enucleation socket syndrome. Actually, calcium hydroxyapatite filler is used in aesthetics for facial weakness. Normally, ये use किया जाता है aesthetics में, लेकिन उन्हें इसके साथ वॉल्यूम डेफिसिट को करेक्ट करने की कोशिश की. एंड में ऑल्सो भी बिकॉज दिस कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट में ऑल्सो भी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग वॉल्यूम लॉस इन द एनोफ्थैल्मिक सॉकेट फॉलोइंग इन्यूक्लिएशन और विजिरेशन. Study design was that this was a 10-year observational study of 31 patients. 31 patients ने लिए, थोड़ा सैंपल साइज छोटा लिया था, with post enucleation anophthalmos who received a single injection of calcium hydroxyapatite filler for orbital volume augmentation. The primary outcome was reduction in anophthalmos severity as measured by Hertz of exophthalmometer. Outcome was that a 3 to 4 mm mean reduction in anophthalmos was noted at 6 months after surgery, and a mean 3 millimeter reduction was noted at 3 years after injection. No long-term complications were noted. But there is a limitation of this study. This was not a comparable study. With this, it was actually a non-comparable study, competitive study with small sample size. Since calcium hydroxyapatite filler was injected into the anophthalmic socket, there was a lower risk of incorrect filler injection into the central retinal artery or ophthalmic artery to cause a vessel obstruction. Clinical significance of that study was that anophthalmic socket often have volume loss. And the traditional solutions of orbital surgery and implants require post-surgical recovery time. आपको time भी चाहिए होता है, and have the potential for many complications. जितने भी हमने पढ़ी है कि एक्ट्रोपियन, टोसिस और सब कुछ, implant extrusion or migration. Results from this pilot study demonstrate that retrobulbar injection of calcium hydroxyapatite was effective in addressing the volume loss with minimal complications and can be considered in the armamentarium for orbital volume augmentation in the anophthalmic socket. Thank you. So very good presentation, very extensive one. जब भी ऑब्जर्वेशन है सजेस्ट करेंगे प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज डूइंग बुक रीडिंग. ये स्टैंडर्ड तो एक्सेप्टेबल नहीं है. नंबर 1. दूसरा, लास्ट तक मैंने कहा था कि आप जब तक कॉम्प्लेक्सिटी गेन करेंगे उस तक प्रेजेंटेशन का फायदा नहीं है. और ये वो सब्जेक्ट है मैं कल जो आपकी इनके एग्जाम में भी आना है. तो आप इसको, मतलब मैं भी बनाने लगा था वो कोड इसका लगे, वो जो आपने भी आपने साइड दिखाई उससे PCCS है. तो आप अपने पास नोट में PCS है, आपको जाए उधर देखने के B से क्या बनता है, C से क्या बनता है, अपने कोड बनाएं, आप उधर देखें. और फिर आप बिकॉज सो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के मुझे डर था कि हार्ट अटैक ही ना हो. इतनी टेंशन नहीं लेनी, इसको प्रेजेंट करें ना, आराम से बातचीत करें. मतलब उसी के नंबर है. अगर प्रेजेंटेशन मुझे कहा जाएगा प्रेजेंटेशन के नंबर से 0, नॉलेज ठीक है बहुत था, लेकिन उनको समझ किसी को भी नहीं आई. सब अपने मैंने देखा था कि
आपके आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, बुक रीडिंग तो ये खुद भी कर लेंगी। आपने इनको समझाना है कि जी जो भी टॉपिक है, मतलब जैसे मैं बताता हूँ, कार्पेटर है, मतलब मैं टेक्निकल जाता हूँ, कार्पेटर का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। इससे पहले उसमें मतलब उसको इसको मेक देम अंडरस्टैंड। अगर ये बुके से अगर पढ़ना तो किताब इनके सामने पढ़नी ही पढ़नी। हम सॉरी सर। हाँ सही। कहने का मकसद है जो हम इसको दूसरे अल्फाज में रखते हैं, जो मैसेज सर दे रहे हैं वो ये है कि जो एम होना चाहिए ना प्रेजेंटर का, वो ये होना चाहिए, नॉट टू रीड फ्रॉम द स्लाइड्स, यू हैव टू लुक एट द स्लाइड्स टू सी कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। वरना कोशिश ये करें कि आप एक एक टॉपिक को बगैर पढ़े वहाँ डिस्कस करें। स्लाइडें इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ से पढ़नी नहीं। तो एक आखिरी जो स्लाइड थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जो स्टडी का, उसको भी अवॉइड करें। इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता, मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। बुलेट्स में लें, 3-4 पॉइंट्स में लिखें और कोशिश करें कि जिस तरह उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 1-2 दफ़ा रिहर्सल करें, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन जब आप घर पे रिहर्सल करते हैं ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन में रह जाती हैं, आपको पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये प्रेजेंटेशन बहरहाल टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करता है। एम हमारा यही होना चाहिए कि हम वहाँ से पढ़े ना, स्लाइडों को पढ़ के ना बोलें, बल्कि अपनी लैंग्वेज में यूज करें। तो कमिंग टू द टॉपिक, जब भी हम, एक तो एनोप्थेल्मिया हो गया, द पेशेंट इज हैविंग कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द आई बॉल, so this is quite rare. Then the next entity is microphthalmos, small eye. Then there is another term, nanophthalmos. So you should understand the difference between the two. So one is functional eye, other is dysfunctional eye. Uh, so, so what are the operations? Number one, evisceration. Most of the cases we do evisceration whenever there is endophthalmitis or there is, let's say, phthisis bulbi, penetrating injury. We remove there is hemorrhage, vitreous hemorrhage. So we remove the ocular contents and suture the sclera with implant inside and then cover it with the conjunctiva. Now, a few points regarding the evisceration are that we tend to respect the conjunctiva because it will form the fornices. If you do an extensive damage to the conjunctiva, then when you suture the conjunctiva, the fornix will be shortened and there will be no place to fit the implant and processes. So to have a proper processes in the socket, you should have a conjunctival fornix. So we want to make the fornix. So this is about evisceration, which is the most commonly done procedure out of all these procedures. Then enucleation. Let's say if there is intraocular tumor, retinoblastoma or a melanoma, you want to remove the eyeball. First, you engage the extraocular muscles with sutures like vicral sutures, as we do in the squint surgery, and then you remove the eyeball along with the optic nerve. So we want to keep a long segment of the optic nerve, usually 10 to 12 millimeter. We pull the eyeball maximum and cut the optic nerve as far behind as we can reach. The aim is to have a 12 millimeter of optic nerve segment. Why? Because the retinoblastoma spreads through the optic nerve. So if there is early spread, then the cut margin of the optic nerve may be tumor free, and this improves the prognosis. If the histopathologist or in the report says that tumor is involving the cut end of the optic nerve, then it means that the tumor has spread to the orbit behind the eyeball. So we have to give extra doses of systemic chemotherapy, right? So this is enucleation. So once we do enucleation, we put an implant. What is the name of the implant?
after enucleation. After evisceration, we put a silicon spherical implant, different sizes, 12, 14, 18, something. So, but after the enucleation, this is called Allen implant. So, Allen implant has slots where we can tie the muscles so that the eye, whenever the muscles contract, the eye moves. There is no eye, but the implant moves. So the processes moves and it gives a feeling that the eye is moving. Another option which we exercise is to have a silicone implant wrapped in uh, vicryl mesh, and then we attach the muscles to the vicryl mesh. So instead of a silicone implant, we wrap the implant because it is difficult to suture the silicone implant. So we have a vicryl mesh wrapped around the silicone implant, and then we suture the muscles onto the mesh. So this is another approach. So once the tumor has spread in the orbit, let's say retinoblastoma or rhabdomyosarcoma or any malignancy that is involved the orbital tissue, then we have to do exentration. So removal of all the orbital contents, soft tissue. So we can spare the lids if these are not involved, or we can also take out the lids in case, let's say, this is a basal cell carcinoma, spacious cell carcinoma of the lids, which has spread to the orbit, we have to remove the lids also. So total exentration or subtotal exentration, depending. And we can apply split thickness skin graft, which we take with the help of a dermatome. I was in CMH Kharia, and it has got the second largest burn unit in Pakistan, and it was just alongside the eye department. So many times I would go there and take the split thickness graft. So that dermatomes is just like वो जो कारपेंटर के पास रंधा होता है ना, वो उस तरह, तो वो इस तरह इनर साइड ऑफ आर्म और इनर साइड ऑफ थाई पे फेरते हैं. So it gives you a split thickness skin graft. So split thickness skin graft are easy to obtain, but the problem is that these contract and you have many a times to do a redo surgery. Full thickness graft we take from retroauricular space, but the space is limited. Similarly, the supraclavicular space, the you can have a smaller graft. Full thickness graft do not contract, so is less requirement for the redo. Okay, so coming to the problem, once you have taken out the eyeball, if the conjunctival fornix contracts, that is the main problem we face. Where to put the processes? You can't. So to make or create a space for the processes, you have to create two mucosal surfaces. If there is conjunctival scarring and you make an incision, it will heal by fibrosis. It will not provide you space. So to create space in the conjunctiva, you have to implant mucosa. And from where you take the mucosa? From the buccal. This is the buccal. You invert the lip, and on from the inner side of the lip you take it, or from the inner side of the cheek. So these are the sites from where we take the buccal mucosa, and we implant it into the conjunctival socket so that it makes the fornices. Hydroxyapatite implant is integrated implant, but it's costly. So we do not use it very frequently. The economical alternatives are silicone implants, so we use that. So any question?